Uh, Today, communication medium have increased so much. See, we can convey a message through a WhatsApp message, through a video call, through audio clip. WhatsApp पे ऑडियो क्लिप भी शेयर किया जाता है. A phone call, चार अलग email. ठीक है. Now let's restrict to mobile. A phone call, a WhatsApp message, text message, a voice note and a video call. ये चारों अलग अलग माध्यम है. आज मैं क्या एक्सपीरियंस करता हूँ कि whether it is young or old, the easiest way to communicate has become texting somebody. But we should understand when to use text as a medium, when to call somebody, pick up the phone and call, when to send a voice message or when to have a video call. See, if it's a one word reply कि किसी ने पूछा है कि ये ठीक है तो मैं okay, I can put a okay message in form of a text. But no, if I want a help from somebody, किसी को मेरे से कुछ help चाहिए और वो मुझे अगर text करेगा WhatsApp पे and it's relatively a big help, I would say to him, he's not a serious guy. He don't even have the courtesy to call me. Forget about meeting me face to face. At least he should have the courtesy to call me. Because our voice has got emotions, text message has no emotions. A simple okay on WhatsApp can be taken as rude statement. आपको भी अनुभव आया रहेगा उसका. पर ये जो टेक्सटिंग कल्चर है ना, इससे काफी झगड़े बढ़ गए हैं ग्रुप में, इंडिविजुअल चैटिंग में. So let's be very cautious about it. It is affecting our friendships at a big level. बहुत झगड़े हो रहे हैं व्हाट्सएप पे. क्यों? Because because the text has zero emotions. जो टोन हम यूज कर रहे हैं टेक्स्ट लिखने के लिए, वो टोन सामने वाला लेता ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ मुझे मैसेज किया, माई टोन वॉज लाइक ओके, बट यू विल टेक एज ओके. Alright, so a simple okay can lead to big quarrels and fights on WhatsApp. So it's easier way to pick up the phone and call. So at the most, what will happen? I'll not pick up the call, but then I'll give you a call back. That's professionalism. But बहुत बार people find it so intimidating to call me. I don't know why. वो 10 बार पूछेंगे WhatsApp पे मैं कॉल करूँ क्या? Then what is the right time? Then I give them the right time, 4 o'clock. फिर 4 o'clock के 2 मिनट पहले वापस मुझे मैसेज करें, कैन आई कॉल नाउ? भाई मैंने बोला ना 4 बजे फोन करो. Now we should use WhatsApp text as a good medium of communication, not as an escape, as a to take care of our fear to call somebody. तो आजकल क्या हो रहा है? We are using WhatsApp as an escape, that we do not have the courage to call and talk to the person, especially if he's a new guy, he's a stranger, a person who is above our status. In this kind of relationships, no, we are using WhatsApp as a escape mechanism. तो वो नहीं होना चाहिए. We should have the maturity to understand when to use text, WhatsApp text, when to call somebody, or no, voice note is, I use a lot of voice notes because the other person comes to know about my emotions, especially if it's a long message. तो कभी कभी क्या होता है, सपोज मैंने धर्मेंद्र को कॉल किया, he was busy, then he called back me, I was busy. इस चक्कर में बस पकड़ा पकड़ी चलती रहती है और बातें होती नहीं है. So at times I find a solution. I leave a voice note for him. You listen as per your convenience. My emotions are also conveyed because it's a voice text. So this is a very good way to protect the emotions and help our relationships. Okay. There are some not so necessary gestures which are nowadays absent. For example, so I'm a chartered accountant by education, not by profession anymore. You know that. And I never took any CA classes. I was never a student where I'll sit and listen to a teacher on the podium and learn. I was a self-studying guy. But I heard that there was a very renowned tuition classes, CA classes in Mumbai called JK Shah. And उनके notes बहुत famous थे. So from a friend who was attending that class, तो मैंने उसके notes के xerox लेके पूरा पढ़ाई करके CA हो गया. And then after getting my results, I went to that sir who is very famous in JK Shah classes and told him that, sir, look,
I was never your student, but I used your notes. And here I am. I'm a qualified chartered accountant. So thank you so much for such beautiful notes. But sorry, I was never your student. That guy, I could see tears of joy in his eyes. He hugged me so hard. और he said that मेरे बच्चे जो पास हुए मेरे पास आए वो कभी कभी आते नहीं है मिलने. And you came and at least had the courtesy to tell me. Of course, I am not disappointed. I loved his gesture. Now, these things are not necessary for me, right? मैं तो डर डर के गया था कि सर डांटेंगे कि भाई ये इलीगल काम है, तूने मेरे नोट्स का जेरोक्स निकाल के तू साला पास हुआ. पर ऐसा हुआ नहीं. Because I owed him something that I used his notes and they were really quality notes. And no wonder that's why they were so famous. So these not so compulsory gestures are missing these days. Okay. Festivals पे क्या होने लगा है पता है? We are using festivals to promote our business. ठीक है, to some extent we should do it. But then wishing somebody on WhatsApp happy birthday, do you really think it has got emotions? मतलब जब मुझे WhatsApp पे किसी का हैप्पी बर्थडे आता है तो ठीक है यार, नॉट मच एफर्ट्स इन. बट वॉइस नोट आएगा, या आई वुड लव इट. मोर देन दैट अ कॉल आएगा, आई वुड लव मोर. हाँ, मोर देन दैट वो मुझे आके मिलेगा, दैट्स द बेस्ट थिंग आई एवर एक्सपेक्ट. अगर मुझे ऐसा लगता है तो सामने वालों को भी ऐसा लगेगा. और वो ग्रुप व्हाट्सएप पे जो हम डालते हैं मैसेज हैप्पी बर्थडे, दे आर यूजलेस. वो तो करना भी नहीं चाहिए. या even wishing each other on festivals has been restricted only to Diwali. Happy Diwali has become on WhatsApp. क्यों इतने हम आलसी हो गए क्या? We can't even pick up the phone and talk. ठीक है, जाके मिलना, it is time consuming. But what about a phone call? What about video call? Video call is an amazing platform. Okay, my sister lives in US, and we only do video calls. There is hardly any chatting or texting or phone calls, audio calls. We do only video calls. No wonder, we have maintained that relationship because when we talk, I was surprised to know that our communication consists 70% non-verbal communication. मुझे लगा ये स्टैटिस्टिक थोड़ा एग्जैजरेटेड है क्या? 70% ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल. मतलब मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, मेरा जो हाथ हिल रहा है, मेरी गर्दन हिल रही है, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस, यू आर नोटिसिंग 70% ऑफ दैट इज कम्युनिकेटेड थ्रू माय जेस्चर्स एंड ओनली 30% थ्रू माय वर्ड्स. दिस इज प्रूव्ड. ये मेरा बना बनावा नहीं है स्टैटिस्टिक. हार्ड टू बिलीव ना, राइट? But see, look at my smile, look at my hands. Yes, I think it constitutes 70%. तो वीडियो कॉल इज अ फैंटास्टिक वे. आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना है. बट देन इट इज इंटिमिडेटिंग. फिर नहीं, मैंने आज दाढ़ी नहीं की है, नहीं मैं एड्रेस में हूँ, बाकी के नखरे होते हैं, है ना? No, of course you have to ask. You can't directly video call because you don't know in what position that other person is, whether he's in bathroom or bedroom. Okay. But no, video call is a very good avenue to build relationships because our eyes talk more than our mouth. One big lesson I learned in demonetization, that how I lacked in building relationships. So I had good amount of money, cash in my house, and मुझे कुछ दूध लेना था, 1/2 लीटर दूध लेना था. सो बहुत सालों से मैं, वो एक नुक्कड़ पे एक औरत है, वो दूध बेचती है, तो उसके पास मैं जाता था और दूध लेके आता था. और फिर डिमोनेटाइजेशन आ गया और वो आई थिंक 1,000 रुपए के नोट्स कुछ बैन हुए थे, ऐसा कुछ हुआ था, राइट? और उस दिन मेरे पास बाकी नोट्स थे नहीं, कुछ ऐसा हुआ, एंड मेरे पास सिर्फ 1,000 की नोट थी. एंड आई ऑफर्ड दैट 1,000 रुपी नोट टू दैट लेडी एंड शी सेड नो, आई कांट एक्सेप्ट, देयर नो मोर वैलिड करेंसी. एंड उसके बाद कुछ ऐसा हुआ which was a tight slap on my face, and I learned a big lesson about relationships. एक दूसरी औरत आई और सेम, शी वाज इन द सेम सिचुएशन. तो उसके पास भी बाकी 50 के नोट्स नहीं थे, 100 के नोट्स थे, 1,000 के थे. एंड शी इमीडिएटली अग्रीड कि ठीक है आपको तो ठीक है यार. उसने, शी अग्रीड विथ हर. उसने उसको सिर्फ दूध दिया और बोला कि आप मुझे कल पैसा दो, चलेगा.
And then I realized the mistake that I did for last so many years. I was meeting this lady every morning at 6 o'clock, but I never inquired about her children, how old they are, what are their names, where does she live, and it involved zero cost. If anyway I was meeting her and spending few minutes with her, there was no harm in asking and establishing a small relationship with her. तो फिर मुझे लगा कि क्या फायदा मैं सीए और पैसा कमा के अगर मैं एक आधा लीटर दूध नहीं खरीद पाया, तो मुझे चुल्लू भर पानी में डूब पड़ना चाहिए। क्या फायदा इन पैसों का? डिमोनेटाइजेशन taught me a big lesson that स्टेटस जरूरी नहीं है। जस्ट बिकॉज वो दूध बेचने वाली है तो क्या हुआ? इफ if I'm anyway going to meet her every day, I might as well talk to her. There is no harm in it. And no wonder I change my approach. और अभी क्या है, एक एक फ्रूट वाला है हमारे एरिया में, वो किसी के घर में फ्रूट्स जाके देता नहीं, वो सिर्फ मेरे घर में देते हैं, because I've established that personal relationship with him. Yeah, I think I've shared all the points from the book which I wanted to. When initially I just one point I skipped, Ashish. Uh, so when I just started Mission Make India Read, so I used to attend all the startup events, networking events, जहाँ पे लोग मिलते हैं और जो गेस्ट आते हैं. I was part of the audience. अभी तो I'm mostly on the stage as a guest speaker, but in those days I was part of the audience, ऐसा सहमा सहमा सा डरा डरा हुआ, not so confident guy. आइडिया चलेगा कि नहीं, ये तो बहुत किसी ने किया ही नहीं है ऐसा, समरीज बनाना वगैरह. So all the renowned speakers used to come and deliver lectures, and I used to, big guys, Kunal Shah, Cred wala, who was running free charge in those days, Ola ka startup owner, सब आते थे. And I used to go after that event. I used to go them and, sir, please help me. I'm doing this. I need your mentorship. I need your expert guidance. Please, can I come to meet you वगैरह? I need your number. तो यूजुअली वो नंबर नहीं देते पर मेरा नंबर लेते थे. मतलब प्लीज टेक माय नंबर सर. ऐसा मैं एक कागज पे, आई डोंट हैव द मनी टू प्रिंट विजिटिंग कार्ड्स, सो मैं कागज पे मेरा नाम और नंबर लिख के उनको देता था, विद द होप दैट दे विल कॉल मी इन 2-3 days. आई नेवर यूज्ड टू गेट अ कॉल. नेवर. देन आई रियलाइज कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ. आई रिवर्स द प्रोसीजर. मैं ये बोलने लगा